औरतों की इज्जत नहीं करता होगा, हमारी औरतों की क्या करेगा? I just want to share sympathies with you in the context. You are not permitting me to complete my sentence. Okay. This is not a form of a true journalism. Absolutely. So I totally condemn this. On what sort of basis, on what basis, on what sort of ideas, wishes Mr. Luqman had portrayed this image, I totally condemn this. So let me move forward. Likewise, when I was in Kashmir, I visited the line of control and that after this Pelgam. So I have seen that people were there. They are also indulging in this debate that this terrorism, the roots of this terrorism should be eradicated. This terrorism should be vanished. We do not want to indulge ourselves in any sort of war, in any sort of terrorism. Likewise, when I talk with those people in India and those broad-minded people in India, especially in Indian-occupied Kashmir, they also say they do not want this war, they do not want this terrorism. But what was the issue of this Pelgam? I have an objection. I have an objection, Mr. Adil Bashir. It is not Indian-occupied Kashmir. It is Kashmir, integral part of India. I reiterate, it's integral part of India. Yes, absolutely. Is your observation. It's Indian Kashmir, yes. In my capacity, that is Indian occupied Kashmir. So, I want to carry my words forward. Right. So, Ma'am Farzana, on both sides, people do not want to indulge themselves in a war, in a situation, and they do not support all those not in Pakistan, not in India, and all those overseas in Kashmir. So, nobody will want to that. So, what was the issue of this Pelgam? We should understand the circumstances of that. Yes, we are sitting in Pakistan in electronic or print media. You are sitting in that Indian electronic and print media. And we are trying to portray the images of our Pakistanis and Indians, and we are bashing with each other. So we are not going to, just for this, you have said that Luqman want to take views or like this, subscribers are like this. So we also want to do that. But this is not justice with this journalism. This is not justice with Kashmiris. This is not justice with Pakistan. You are sitting in India. This is not justice with India. The issue of Pelgam was when there was a terrorist attack, India started blaming. Their agencies started blaming that this Pakistan is linked with this terror, this terrorism linked with Pakistan, and Pakistan that this is a false flag operation. So Pakistan demanded that if you say that this is a terrorist attack and those terrorists are being supported, have been supported by Pakistan, just show me the proof. So still there is a question that India didn't provide or didn't place any proof either in on both sides of this platform or in United Nations Security Council. अदील साहब, अभी जो है जांच हो रही है, देयर इज जो एजेंसीज हमारा जो ये जो केस है पहलगाम का, वो एनआई के पास आ चुका है. दे आर वर्किंग ऑन इट. डेफिनेटली जब तक कि कुछ प्रूफ नहीं आए होंगे, मतलब वो ऐसे भी तो नहीं कहेंगे ना. आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, आप भी जानते हैं हालात, मैं भी हालात जानती हूं, लेकिन मतलब कुछ ऐसे आप भी जानते हैं कि कुछ ऐसे हालात हुए कि जहां पे बार बार पाकिस्तान का नाम आया है, और यहाँ पे भी जब तक ऐसी कोई प्रूफ नहीं होगा तो यूं ही मतलब पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा. ये मतलब ये मैं आपसे, ये आपने जो अभी तक बात कही, ये जो आप कह रहे हैं, मैं आपको उसका जवाब दे रही हूँ. जी, आप आगे बढ़े. अच्छा, अब जस्ट वन थिंग मोर. My participant is there. He raised a question that this is some Lashkar-e-Taiba or some other organization has proved this. Yes, they have claimed, of course. उनकी तरफ से बयान आया कि ये हमारी एलईटी के टीआरएस ग्रुप ने किया. They have claimed, sir. They have claimed. They have claimed. So this is an information for me that Lashkar-e-Taiba has said that we did this. This is an information but I don't know. We don't have any information. You have any information you have shared with me. I don't have any information. Sure, I will share everything what we have with us, and yes, absolutely. Since you have been covering defense and international experts, geopolitical affairs, you must be known. You must be known about these things, I believe. Anyhow, since you are not aware, I will share all these things. And I have another question. What about Balochistan? Why they are opposing Pakistan's presence and Chinese presence in that particular West Pakistan area?
and the commander of that BLA. There are two perspectives, or there are two mindsets prevailing in Pakistan and in diaspora about Balochistan. The first one, the first perception, and the perception which is prevails, that, like in Pakistan or like in India or developing countries, people are more demanding from states, that they want that their basic necessities should be fulfilled. So all those who do not want to carry their perspective or their ideology with an appetite, so they mostly they take arms and they stand against the state. This is one perspective. The other perspective is, which Pakistan is placing. The other perspective is, Pakistan says that all terrorism and all those entities which are in Balochistan are being trained by India. Either it is BLA, I expected the same kind of answer from your answer. Yes. Just listen. Just listen. I am placing this, my words, that Pakistan is saying that this about second perspective, that all those activities which are being done against state or against Pakistan in Balochistan, that is being supported by raw or Indian administration. This is the Pakistan's perspective. Your question was, what is the issue of Balochistan? I've explained that there are two perspectives. The first perspective is in a lesser quantity, or is a less. As an independent journalist, what is your perception? See, you have mentioned two perspectives. What is your personal perception? You are an independent journalist. You can say. This is a very good question. This is a very good question. I don't want Pakistan's perception. I want your perception on the record. Just listen. Yes, I agreed. All those which are being deprived of the basic necessities, they stood against Pakistan, the Pakistani government, or the state, or the Balochistan government. And when their activities monitored by all those monopolist attitude mindsetters, like it can be those sitting in Afghanistan, those sitting in India, they used them and properly funded by those countries, and not in India, other countries as well. They supported and they became warlords. Number one. The second one is about BLA. Yes, this is very clear. I personally met with many different people, the students and the families of them. Yes, they are being supported by Indians in raw. But this is not the solution. When you place your ideas, when you calculate your thinking, this is not the solution that you blame on something. We have a proof now. Jafar Express, we have a proof of Jafar Express. We placed that proof. So my perception is this should be ended. The terrorism or terrorists when you proof, as you rightly said earlier, Mr. Bashir, as you rightly said earlier, you have proof about Jafar Express incident. You place it before United Nations Security Council. Since you have been demanding India to place proof before Security Council, same demand from our end. Yes, this is a good question. I'm covering also foreign affairs, but the things are in pipeline. So, any question from Farjana ji? No, thank you. All right. Shubli Garu, do you have any question for बशीर साहब, मैं यहाँ पर जो है चंद चीजें हैं आपसे पूछना चाहता हूँ. एक और चीज भी देखिए, खैर आप तो जो है कई चीजों को जो है आप ऐसे ही जो है उसको आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फरजाना जी ने जो बात कही थी कि जंग जो है हर चीज की सॉल्यूशन नहीं होता, और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, क्योंकि जब अमेरिका और अफगानिस्तान, जब मैं अभी प्रोग्राम में दाखिल हुआ था, सो आई फेवर्ड दैट स्टेटमेंट. पहले एक मिनट साहब, अमेरिका और अफगानिस्तान की जब लड़ाई हुई थी, अमेरिका ने तो जीत हासिल की है, लेकिन अमेरिका जीत के भी हार गया. लेकिन अफगानिस्तान तो हार गई थी, लेकिन अफगानिस्तान हार के भी जीत हासिल हुई. मतलब वार के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं इस तरीके से होते हैं. लेकिन मैं यहाँ पर जो है, मैं एक बात यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, खैर इश्यू एक मर्तबा उस इश्यू की जो गहराई है उसके ऊपर देखिए आप.
देखिए कोई चार बंदे आते हैं, हमारे हिंदुस्तान में घुसते हैं, हमारे हिंदू भाइयों से जो है वो पूछते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम कलमा पढ़ो बोल के पूछते हैं, और बहुत ही गंदी हरकत भी करते हैं। क्योंकि हमारी बहन इस शो में है तो मैं उस बात को दोहरा नहीं सकता। तो उनके साथ जो है उस तरीके का जो है व्यवहार करके उन लोगों को जो है पॉइंट ब्लैंक में रख के जो है उड़ा दिया जाता है। अगर इनको इतना ही मानने का शौक था तो क्या आपके पाकिस्तान में हिंदू नहीं है? अगर पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ भी ये करना, ये भी गलत है। एक तो इंसानियत के खिलाफ है। आप यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश से एक औरत जो कि उसके हस्बैंड को खो गई थी, तो जब वो लोग जो है जब टेररिस्ट सामने आए थे तो उन्होंने जो है दोनों ने अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में थामा और नीचे सो गए। सो जाने के बाद में वो करीब आकर जो है उससे पूछा कि तुम हिंदू है कि मुसलमान हो, तो वो कुछ जवाब नहीं दिए तो वो जो है गोली मार दिया। लेकिन इसको पता नहीं चला कि गोली हमें लगी है, वी आर सेफ बोल के समझ रही थी। लेकिन उस बंदी का जो स्टेटमेंट था, आप यकीन नहीं करते, 48 घंटे तक मैं इंसान नहीं बन सका। क्योंकि वो बता रही थी कि उसका जो खून था वो खून पूरा जो है उसके हस्बैंड का खून पूरा उसके खून से लथपथ हो गया। अरे इतनी वहशी तौर पे इतने गंदे तरीके के साथ जब वो मारते हैं तो ये एक इंसानियत के ऊपर अटैक, इतना अटैक होता है। और मैं बशीर साहब, मैं आपसे सवाल तो पूछना नहीं चाहता, लेकिन आपकी इंसानियत के लिए जो है मैं सलाम करना चाहता हूं कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए। लेकिन जो 26 अफराद जो गए हैं, जो 26 अफराद जो मारे गए हैं, उनके लिए जो है आपने कंडमेशन का एक मैसेज भी जो है आपने अपनी शुरुआत में नहीं कहा। अगर आप कह देते हैं तो मैं जो है आपने तो जो है आपने मुझे, लेकिन सुनिए, अब आप इंसानियत के खिलाफ आप अगर नहीं, मैं बिल्कुल मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था। आपने कहीं पर भी इस बात को जो है आपने दर्ज नहीं किया कि जो है मैं इस चीज को जो है कंडम करता हूं। आपने जो है जो आपकी जो सेनेटर ने जो बात कही थी, या सेक्स वर्कर्स जो यहाँ के बॉलीवुड के वर्कर्स को जो है सेक्स स्लेव्स बनाना छोड़ दीजिए, एक आम रोड के ऊपर जो मंग खाने वाली जो औरत होती है उसके साथ भी ऐसी बात करना, ये भी गलत बोलता हूं मैं। अरे इतनी गैर बात है। प्लीज अलाउ मिस्टर बशीर टू स्पीक आउट। शुभलियर, ये सरासर गलत है। यस, सुनिए, अगर आप ये समझते हैं कि आप माशाल्लाह बारिश हैं, एक पोजीशन पे बैठे हैं इंडिया में, आप ये समझते हैं कि अगर इनफरादी सतह की गुफ्तगू को हमने टेलीविजन में बैठ के डिस्कशन में लेके आना है तो फिर तो सलाम है, हमें डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। हमें बुनियादी बात करनी चाहिए। मैं कंडेम करता हूं पाकिस्तान का जो मैं एकदम खुले अंदाज में समझ में आ गया कि अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमने ये नहीं करा और दूसरे तरफ जो है आप उसको कंडम तक नहीं कर सकते। इस तरीके की इंसानियत है आपकी, इस तरीके की इंसानियत है आपकी। अरे कौन आपको अधिकार देता है? कौन अधिकार देता है? आप पाकिस्तान में भी नहीं रख सकते। आपने थोड़ी देर पहले हम क्यों किसी के लिए कुछ करेंगे? आप अपना पर्सनल ओपिनियन तक नहीं कर सकते। आपको अपना पर्सनल ओपिनियन तक करना चाहिए था। क्या आप इंसान नहीं है? आप पाकिस्तानी होने से पहले आप एक इंसान है। अगर आप जो है वो कैसे कर सकता है? अमन कर दिया गया, 36 लोगों को इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पे। क्या आप इसको कंडम लगाते नहीं है? क्या इल्जाम लगाते हैं कि आपका जो है, जो आपके वहां पे इंटेलिजेंस के लोग मारे गए उनका पता ना चले? आप लोगों ने खुद किया, जो भी किया आपने सारा, आपके अपने इंटेलिजेंस के लोग इस पहलगाम में मारे गए, आपने खुद कराया पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए, आपने सब किया पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे डैमेज करने के लिए, डायस्पोरा में पाकिस्तान को खराब करने के लिए आपने ये काम किया। और आज आप इस सेकुलर माइंड के साथ अप्रोच के साथ आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान कहां से आया? हाउ पाकिस्तान डिड दिस? डू यू हैव एनी प्रूफ? ये देखिए, आप लुकमान में जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, शेख अफजल मरवत में जा रहे हैं, आप बुनियाद पे बात करें कि कहां है पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान ने क्या करवाया? इंसानियत के खिलाफ है। आपका सारी ये सारी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। 2008 में क्या हुआ, 2016 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, इस सब के प्रूफ है आपके पास। आप उठते हैं तो पाकिस्तान पे बात करते हैं, आपके पास कुछ है नहीं। कंडम करना चाहिए था जनाब। हम कंडेम करते हैं, लेकिन बिल्कुल तौर पे भी आप उसको कंडेम कर सकते हैं। पाकिस्तान को आप ले करेंगे, हम सवाल उठाएंगे, आप क्यों नहीं बोलेंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि आप याद रखेंगे, हर कम्युनिटी को जवाब देंगे वहां पे, कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व होती है। और अगर आप जैसे लोग वहां पे इस चीज पर शर्म फैला रहे हैं, इस शर्म फैला रहे हैं, तो अच्छे जवाब देंगे।
आपके अब दिल में जाते क्यों नहीं है, है इसलिए आप इस मामले नहीं को कर रहे हैं। आप लोग मुतशद्दिद के बात करते हैं, आप लोग आप अमन की बात ही नहीं करते हैं। 26 लोगों को किस तरीके से मार सकते हैं आप लोग? क्यों मारे आप भाई लोग? 36 लोगों को जो मारा है मौलाना किसने किया है आप साहब, लोगों तो को? उन 26 ये लोगों को सरासर टेररिस्ट है। ने मारा है, जिसको कंडेम करता है पाकिस्तान। मैं बात ये साफ ही कंडेम करता हूं, लेकिन आप कहां इस पर बात आप को, मैं आपको बोलने के सलूट बाद है में इस कंडम बात को, करेंगे आप? आपके बैकग्राउंड मैं सलूट है। बोलने के बाद में एक कंडम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट आप? चीज को, एक ख्वाहिश को आप पाकिस्तान के साथ नथी कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं। हाउ डेयर यू, आप किस तरह कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ अरे link? हाउ डेयर यू, है आपके पास, यू हैव नो ब्लडी प्रूफ एज वेल, कुछ भी नहीं है आपके पास। Right, Mr. लोगों का जो Shubli garu, are you okay? Yeah, Have fine, some fine. water, have some water, cool down. And Mr. Adil Bashir, see, you are asking, you are posing a question to Mr. Shubli, how dare you? Without proof, we don't say anything. And you are mentioning some past Yes. things where I have mentioned you are without mentioning, just one showing minute, proof. one minute, I have listened to you. I have listened to you, Security sir. Council. I have listened to you, sir. Let me complete. I have a question regarding Baluchis. You are alleging that India has been behind that. Just imagine, Yeah. Balochistan, to reach Balochistan, we have to pass through your key cities. See, it is not that much easy for any agency or any individual. And Baluchis are basically some 44 sets of tribals are there, and they have different constitution. And you might have remember about 1877 treaty between Baluchis and the then British government, the then Indian British government, British Indian government. And later, while they were leaving India, and when they asked Baluchis, they said that we want to be an independent nation. They did not want to merge themselves with Pakistan. And forcibly you have taken that area into your control, and those people, those who are living in Balochistan, they are being treated as second-rate citizens. Now they have been asking both China and Pakistan to step back from their area. They have been guarding themselves. How come Ra will intervene and Ra will support, Ra will fund? Do you have any proofs? Right. The same question I am asking. When you asked some time back that do you have any proof about Pakistan's involvement in Pahalgam attack? I am asking, do you have any proof? Show me then, since you are covering defense operations since long many years, so many years. You please provide the proof that Ra is there behind that. Who was Kulbhushan Yadav? Was he not an agent of Ra? Your express train has been hijacked. You are claiming that this was the act of Ra. How come you say like that? So my question is, he was not an agent. He was not your agent. Who is? Tell me the name. Tell me the name. Share me the details. What do you Share think? me the details. What do you think? What do you think? This sort of complexion we drive here. Do you think that No, this sort of you only complexion, alleged this sort first of that you only have alleged. Pakistan from this Mr. statement that India is Bashir, not Mr. supporting Bashir, DLAs and other Mr. terrorists in Bashir, Pakistan Mr. against Bashir, Pakistan. I have listened to you only leveled allegation that You didn't answer. India Who was Kulbhushan is Yadav? behind, Ra is Who was behind Kulbhushan that, Yadav? and you are asking that show me the proof, show us the When proof. you answer me, who was Kulbhushan Yadav? He was not an agent of Ra. So If you are at the right please calculate. then place the same evidence before United Nations Security Council, as you have been suggesting time and again to India, that place your submissions before the United Nations Security Council. Let both of us do the same thing. Let us submit our evidences before the Security Council. They will give us they will give us the final verdict. Are you ready for that? Are you really ready for that? So you are admitting this? So you are admitting this that the Pakistan should produce the evidence of Jafar expressed to United Nations Security Council? You are in favor of supporting of this statement. On the other hand, Pakistan is demanding that India is unleashed Pakistan of the linked terrorism of this Pahalgam and Pakistan and terrorists, and Pakistan is demanding that. So what is truth in it? No, you asked for proof. We are also asking for proof.
Simple. I have shown you didn't, yeah, yes, I have shown who is, you said that where is wrong. You said that where is wrong. So I have commented on that who was Kulbhushan Yadav. So you share me the proofs whatever you have with us, sir. I also will share you. Anyhow, we will meet again, Mr. Adil Bashir. Now it's almost 1 hour. Thank you for your generous presence and participation, and thank you so much, airing Maulana Sahab. and Pakistan's views. Thank you. And thank you. Welcome. And I am glad that I am